welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks log marginal gains amid positive global cues. Sensex closes above 58,800 points. Nifty settles above 17,550 points. And Brent crude oil prices hover above $100 per barrel level. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सकारात्मक रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त में रहे। सेंसेक्स 58,800 के ऊपर आया, निफ्टी 17,550 के आंकड़े को कर गया पार। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 58,800 और निफ्टी 17,550 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 59 यानी 0.1% बढ़त के साथ 58,834 दर्ज हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक यानी 0.21% लाभ के साथ 17,559 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी लिवाली तेज रही और सेंसेक्स निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.4% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.35% की वृद्धि हुई। Sensex and Nifty today posted marginal gains with both stock indices adding amid positive cues from the global share markets. Sensex finished above 58,800 points, while Nifty settled above 17,550 level. Sensex rose by 59 points, 0.1% to finish at 58,834, while Nifty added 36 points, 0.21% to end at 17,559. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index climbed 0.4% and the small-cap index ended 0.35% up. In the Sensex pack, 19 companies have posted gains while 11 logged losses. NTPC climbed 2.8%, Titan gained 2.7% and Power Grid surged 1.9%. On the other hand, IndusInd Bank lost 1.9%, HDFC and Asian Paints both plunged 1.2% each. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 16 sectors gained while 3 logged losses. The metal sector gained 1.6%, consumer durables index rose 1.5%, and the utilities sector ended 1.3% up. On the other side, realty sector fell by 0.4%, and the FMCG index slipped 0.2%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,916 companies gained while 1,506 companies fell. Shares of 143 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 1 पैसे मजबूत होकर 79 रुपए 87 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.17% नुकसान के साथ 108.29 पर चल रहा था। पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, साथ ही पूरे सप्ताह जो शेयर बाजार में कारोबार हुआ उस पर त्वरित आपकी प्रतिक्रिया भी हम समझना चाहेंगे। तो मनोज जी, हमने देखा कि पिछले 5 सप्ताह से लगातार बाजारों में अच्छी तेजी थी और बढ़त थी। उसके बाद पिछले सप्ताह जो सप्ताह गया है, इसमें हमने कुछ रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखी। शुरुआती दौर में बाजार तेज था, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही और आज भी बाजार एक रेंज में काम कर रहा था। खास बात यह है कि हालांकि जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं यानी निफ्टी और सेंसेक्स, उसमें हमने पूरे सप्ताह के बेसिस पे देखे तो थोड़ी गिरावट थी, लेकिन फिर भी जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं
वहां पर इस सप्ताह भी हमने देखा बढ़त रही। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि बाजार का जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव है, बल्कि बाजार में जो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन है, यानी जो छोटी कंपनियां हैं, मंझोली कंपनियां हैं, वहां पर अभी भी इन्वेस्टर्स का बहुत इंटरेस्ट है, वहां पर हम बाइंग देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश है। और जबकि ये सप्ताह काफी वॉलेटिलिटी की उम्मीद थी, क्योंकि एक्सपायरी वीक था और नई सीरीज जो है सितंबर की वो शुरुआत हुई है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कॉल ऑप्शन प्रीमियम जो है वो काफी अच्छे हैं, काफी बढ़े हुए हैं। और उससे ये लगता है कि इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो एक महीना है, सितंबर का महीना है, उसमें भी बाजार मजबूत रहेंगे। तो कुल मिलाकर आई थिंक द अंडरटोन इज क्वाइट पॉजिटिव। Puneet, just looking at the FII, DII data in terms of net buyers and sellers today, the difference is not all that much. The FIIs, FPIs were the net sellers to the tune of 51 crores only, but their buy value is more than 6,000 crores. The sell value is 6,177 crores. So it appears that the buying interest and the selling interest is more or less the same. They're just reallocating the purchase across different stocks within the BSE, Sensex and NSE Nifty. Is that true? That is true. Right now, the FIIs are kind of, trading in a range, and they are buying certain new investments and they're selling off where they're getting money. So they've taken a profit booking kind of a approach in certain sectors. But interestingly, the buying by FIIs in last couple of months is now 45,000 crores. And now they're kind of pausing. So which is very positive. And what we have seen is that there has actually been a lot of FII selling in other emerging markets like China, where they have pulled money out of the markets. In fact, they had an option of going to either Brazil or India. They are the two large emerging markets, and they chose to invest in India. So clearly, I think so we can't take the FII investments in India as something which is on a global scale, and no, India just got a part of that. I think India is being seen positively by FIIs. They have been buying. Of course, some profit booking happened, like I said, this week, and they haven't put in net large sums of money. But I think their interest continues to be quite positive. Most of the buying that we have seen by FIIs has been the financial sector. So they have been buying into banks, NBFCs, other finance-related stocks. So that appears to be the focus of FII investments right now. पुनीत जी, यदि हम आज की गतिविधि पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहें तो आज धातु कंपनियों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। 1.5% से अधिक बढ़ा है मेटल सेक्टर। दीर्घकालीन यदि हम नीति लेके चलें, यानी 1.5-2 वर्ष का यदि हम समय लेके चलें, तो मेटल सेक्टर जो वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां हैं उसमें कैसा प्रदर्शन करता लग रहा आपको? मनोज जी, देखिए, जो हमारे उम्मीद है कि जो मेटल सेक्टर में एक गिरावट थी वो आ चुकी है। हमने बहुत शार्प फॉल देखा था प्राइसेस में भी, और साथ में सरकार ने कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी स्टील के ऊपर, तो वो उससे भी काफी एक्सपोर्ट्स पे एक बारी उससे फर्क पड़ा था। तो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो ये पॉलिसी है, शायद उसका रिव्यू इस सप्ताह होना, ऐसा मार्केट्स में इस प्रकार की उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी स्टील के ऊपर वो रिव्यू करेगी आने वाले सप्ताह में, और उसको लेकर मुझे लगता है कि उम्मीद थी और बाजारों में मेटल सेक्टर के शेयर्स में तेजी थी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज अब काफी कॉम्पिटिटिव है ग्लोबल स्केल पर इन मेटल सेक्टर। स्टील में खासतौर से हमारी क्षमता जो है वो काफी बढ़ी है, और इंडिया काफी बड़े पैमाने पर अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है स्टील, और कॉम्पिटिटिव भी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 1.5-2 वर्ष का, जैसे आपने कहा कि अगर हम एक होराइजन देखें, तो आई थिंक द परफॉर्मेंस विल बी गुड इन नेक्स्ट 2 years. Puneet, you mentioned about the metal index. It went up by 103 points today, and with the expectation that the government will review its policy regarding customs duty and quota, the export duty on metals. But what about the macroeconomic challenge of inflation? You have the RBI policy also of maintaining inflation within a certain limit so that interest rates are not raised any further. So how do you see the government reconciling inflation versus ensuring that the metal companies continue to remain competitive?
So, Arjun, in fact, if you look at the markets across the world, markets are moving on the premise that central banks will be able to bring down inflation by end of this year. We might see another steep interest rate hikes in September and October. But markets, if you see, they're going up because the hope is that the central banks will pivot to easy money policy, or no, they will pivot to some kind of easing in the monetary policy by end of this year. And we are all working on that premise. In case inflation persists, or there is some other global event which forces prices higher and interest rates go higher, then I think all the bets will be off the table. So right now the markets are working on the premise that inflation will come under control. In fact, interestingly, in the US today, we got new data which is usually monitored by Fed, which is called personal consumption expenditure, and it is some kind of an inflation indicator. And that has come out again soft. So I think that market expectation that inflation will begin to come down later this year, I think those hopes are being proved right now. And markets and metals and commodities are really working on that premise coming true. So you think 4% target by the central bank can be achieved in terms of maintaining inflation of consumer price index? So RBI's 4% inflation target, I think, will be achieved next year. So I don't think it will be achieved end of this year. It will be too steep a fall, which will really hurt economic growth. I think the best will be to have a soft landing, and we get the inflation down to 4% range by middle of next year. I think that will be quite commendable. हम आपका ध्यान पुनीत जी आकृष्ट करना चाहेंगे आने वाले अगले 2-3 महीने, यानी जो फेस्टिव सीजन शुरू होगा, उत्सवों का महीना आने वाला है 1 महीने के बाद, उसके बाद कौन कौन से ऐसे क्षेत्र बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दिख रहे हैं जहां पर चमक देखी जा सकती है, खासतौर से जो बारिश के हालात हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए? मनोज जी, देखिए, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक पैटर्न हमने देखा है बाजारों में भी रिसेंटली, और डेटा जो आया है रिजर्व बैंक का, उन्होंने बताया कि जो क्रेडिट ग्रोथ है इस वर्ष वो करीब 14 से 15% क्रेडिट ग्रोथ हो गई है बैंकों की। पिछले कई वर्षों से, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी, ये क्रेडिट ग्रोथ मुश्किल से 4-5% रहती थी, जो बताती थी कि जो बिजनेस एक्सपेंशन है वो स्लो है इंडिया में। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो बिजनेस एक्सपेंशन है, अगर क्रेडिट ग्रोथ को हम डेटा लेते हैं तो बिजनेस एक्सपेंशन बहुत अच्छा हुआ है। इसके 2 असर हैं। एक तो सीधा बैंकों के ऊपर है, जो बैंक लोन देते हैं बिजनेस को, उनको प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले जो फेस्टिव सीजन है, अगर इन्वेस्टर्स देख रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर में अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है, और मुझे लगता है कि यहाँ से काफी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफी अच्छी अर्निंग्स भी हैं, डिविडेंड्स भी बहुत अच्छे देते हैं बैंक, पर्टिकुलरली जो सरकारी बैंक हैं, मुझे वो लगता है कि काफी अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए, और आने वाले काफी समय तक वो अभी अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। उसके साथ ही अगर आप देखें तो ये जो पैसा क्रेडिट ग्रोथ जा रही है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रही है। तो जहां भी आप रियल एस्टेट की बात करें या कैपिटल गुड्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, मुझे लगता है ये सब सेक्टर जो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इसके अंदर ग्रोथ बनी रहेगी, और इन्वेस्टर्स तो फेस्टिव सीजन तो एंजॉय कर ही सकते हैं, साथ में निवेश करना चाहें तो मुझे लगता है ये सेक्टर्स अच्छे रहेंगे। One of the specific stocks, even though we don't discuss individual stocks on the market mantra as a policy, it went up by 2.7%. And if you look at the Tata Group companies, all the stocks in fact went up, maybe with the exception of LXC, with Nelco going up as much as 10%. What is it about the Tata Group companies which is really driving investor buying interest? Interestingly, I think the whole idea of Make in India, because Tata Group is very focused on increasing its manufacturing capabilities, India's manufacturing capabilities and capacities. So Tata Group is seen as a very nationalist and pro-India kind of industry group. Of course, Tata Group enjoys very high corporate governance. Investors have a lot of confidence in the companies. So I think we have seen that investors in Tata Group have been pretty happy, and they have a lot of confidence in the management. Even if you look at Air India privatization, I think they came out very, very strongly and very transparently in favor of supporting Indian companies. So I think that is one of the reasons why Indian investors, domestic investors, have been very supportive of Tata Group. That's what I guess. What about the rupee? It just
appreciated marginally by 1 paise against the US dollar at 79.87, but it did very well against the Chinese yuan because China's economy is facing a problem right now. How do you see the rupee right now? You spoke about what the derivatives is for the FNO series for the month of September. What does the currency market hold for the rupee? So, Arjun, if you look at the pressures on the currency market, they were coming from a couple of places. One, of course, is the import of crude oil, which has almost doubled on a gross basis. Crude oil imports went up from $100 billion to about $200 billion, increasing our trade deficit. So that was putting pressure on the rupee. And also the selling by FIIs, because they sold stocks worth about 2.5 lakh crores in net. And that also put a lot of pressure on the rupee. Now, one of these factors have reversed. So FIIs are no longer sellers. In fact, they have pumped in 45,000 crores, like I said. So I think the rupee, the worst behind us, it should stabilize in the current level. And I don't see any fundamental problems. If through this entire pressure on the currency, India's foreign exchange reserves fell by about $50 to $60 billion, from $630 odd billion to about $580 billion now. So I think we did very well in this entire period of very high pressure on the rupee. Euro has fallen so significantly, it is almost at par with dollar now. If you ask me, relative basis, Indian rupee has done extremely well. यहाँ पर श्रोताओं, हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां चीन को छोड़कर अन्य प्रमुख बाजारों में तेजी देखने को मिली। बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज 0.3% घाटे में रहा। हांगकांग की हिंगसेंग में 0.1% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.6% ऊपर आ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में मिलाजुला रुख था। लंदन का FTSE 100 0.2% बढ़त के साथ समाचार तैयार किए जाने तक चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.1% की गिरावट थी, जबकि जर्मनी का डेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। Puneet, even in the afternoon program of Money Matters, we discussed briefly about China in terms of the stimulus measures by their central bank, but you also mentioned about the real estate crisis, which is really looming large in the midst of the zero tolerance towards COVID and the lockdown that's followed as a result of it. What is this real estate crisis and why is it so dangerous? So in China, what has happened, in fact, we must appreciate that China's GDP growth for the last 20 years, almost 1/3 of that growth was actually contributed by real estate sector. They went on building mega cities. In fact, the many cities were built which are not even occupied by buyers. And you know about ghost towns in China where there were large townships built and there were no residents. So China had this very large real estate sector. Many of these companies which led that growth, they have gone bankrupt now. You know the case of Evergrande, many other real estate companies, they did not deliver the projects that they had contracted. In fact, China has been facing a huge crisis lately because now the home buyers in China have refused to pay the banks. They are not paying on the mortgages, they're not paying installments, saying that they haven't got homes. So and this is a huge $2 to $3 trillion sector of the economy. So you can imagine if that part of the economy, which also employs the largest number of people, so that crisis is still unfolding in China. The government is not able to. You mentioned that China has unveiled about $140 billion of
stimulus package, but I don't think that is sufficient to turn around a huge sector which involves about $2 to $3 trillion. So my own guess is that China's real estate problems are not going away easily, because those houses have to be built and they have to be delivered to home buyers. Again, that also was the biggest consumer of commodities like steel, cement, the other commodities that are used and consumed in home building. So I think China's economic problems are significant, and they're not going away in a hurry. It's not as if they can simply pump in money and the economy will start coming up again. Essentially, I think real estate crisis in China, that will take some time to resolve. Hopefully it will be resolved by next year, and then the economy will probably come back to some moderate growth. पुनीत जी, हम आपका ध्यान जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की स्थिति और गर्मी तापक्रम में जो बदलाव आया है, विशेष रूप से चीन में भी कृषि क्षेत्र पर उसका असर पड़ता दिख रहा, उसके अलावा यूरोप में भी दिख रहा और दुनिया के अन्य देशों में भी इसका प्रभाव पड़ता दिख रहा, तो वह निकट भविष्य में और कह लें कि लंबे अरसे में भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किस रूप में प्रभाव डाल सकता है अपना? मनोज जी, आपने सही कहा। इस साल ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का कि जो हम सूखा देख रहे हैं, चाइना में है, यूरोप में है, बल्कि भारत में तो इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है फॉर्चुनेटली। इन सम पॉकेट्स है, लेकिन ज्यादातर जगह बारिश ठीक है। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है वो काफी इफेक्ट होगी पूरे विश्व में, और इस साल हम फूड इन्फ्लेशन का एक खतरा जरूर बना हुआ है। हालांकि बहुत बड़े बफर स्टॉक्स हैं। अगर भारत की बात करें तो गवर्नमेंट के पास काफी सब्सटैंशियल बफर स्टॉक्स हैं, लेकिन आज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जबकि राइस में हम काफी कंफर्टेबल, हमारा प्रोडक्शन फिगर्स हैं। पिछले साल भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई थी। इस साल भी उम्मीद है कि हम सिर्फ शायद 2 या 3% ही लास्ट ईयर की प्रोडक्शन से हमारी प्रोडक्शन कम होगी राइस और व्हीट की। पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आपने सही कहा है कि इस साल हमें खतरा जरूर बना रहेगा फूड इन्फ्लेशन का, शॉर्टेजेस का टू सम एक्सटेंट। Definitely that is a challenge. Speaking of inflation, to what extent is the lockdown in China contributing to U.S. inflation? The market cheers if the inflation goes up by 50 to 60 basis points from 9% to maybe 8.4, 8.5%. To what extent do you see China contributing to exporting inflation into the U.S. and when do you see this situation being resolved as far as China is concerned and the U.S.? So, Arjun, in fact, the main issue, in fact, in U.S. was very high consumption, because the unemployment was lowest in many decades. So, incomes in America have gone up a lot, and the demand in America for goods, they went up. Now, when this happened during pandemic, the supply chains were disrupted. So the inflow of goods into America was less than usual, and therefore the prices went higher. And that is what US Fed is trying to resolve. By increasing interest rates, they want to bring down demand. So there's some kind of parity between demand and supply, and therefore prices come down. I think it will take 3 to 6 months more for US to not have some kind of victory over inflation. But the important thing is that we should start getting indications that inflation is coming down. So like you mentioned, if from 9% inflation comes down to 8.5%, and let's say next time it comes down to 7.5%, then it would appear that Fed is moving in the right direction. I think that is what markets are looking for, the reassurance that inflation will not rise from here and gradually it will come down. They're not looking at expecting inflation to come down to 2% or 3% next month or in the next 2-3 months. But they want to be assured that inflation is under control and will come down in 3 to 6 months. Moving on to the U.S. stock market, Wall Street ended sharply higher yesterday, lifted by gains in Nvidia and other technology-related stocks as investors focused on the Fed Reserve's Jackson Hole conference for clues about the central bank's policy outlook. The Dow Jones Industrial Average Index gained 1%, the S&P 500 rose 1.4%, and the Nasdaq Composite Index climbed 1.7%. Very briefly, the Fed has raised the discount rate by 225 basis points. It's expected to raise in a series to 150 basis points according to the money markets data. What is your estimate of what the Fed is going to do and its impact globally?
So I agree. I think the Fed will continue to raise rates aggressively until the economic growth or inflation comes down significantly. So you're right. I mean, interest rates could go up by another 150 basis points by next year. Having said that, I think U.S. Right now appears to be heading for a soft landing. There was a lot of talk of recession some time back, but I think lately the consensus in money markets is that we may not see a very big crisis in growth, and the economy, U.S. economy may head for a soft landing. विश्व अर्थव्यवस्था से लौटते हैं स्वदेश की ओर और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र MSME से जोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक नीतियों में बदलाव सहित सभी उपाय कर रही है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME तथा स्टार्टअप सम्मेलन और एक्सपो को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री जितेंद्र ने कहा कि सरकार वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए अनूठे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सके। And in more news, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met Deputy Treasury Secretary USA Wally Adeyemo in New Delhi today. The two sides exchanged views on global economic and financial sector issues. In a tweet, the Ministry of Finance said that both the leaders discussed India's G20 presidency in 2023 as well as areas of cooperation for continued and enhanced India-US partnership. News from the oil market now. Brent crude was trading at $100.55 per barrel, while WTI crude prices were at $93.90 per barrel. Very briefly, what's your take on what's happening with OPEC plus? There appears to be some dispute in terms of reclaiming the Asian market after oil was being sold by Russia, and Saudi Arabia saying that we are in charge of OPEC plus and nobody else. So clearly, I think there is some kind of a commercial angle there. But interestingly, I think oil prices will really look for this Iran nuclear deal, because if Iran becomes a supplier in global markets again, we could see 4 to 5 million barrels per day of oil coming into market. So look for that event. I think that will really push oil prices down. So you think comparatively we can get a better deal like we have with Russia, with Saudi Arabia as well? I think so. I think there's talk of Asian discounts. Let's see if it happens. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 250 रुपए घटकर 51,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, लेकिन सितंबर अनुबंध वाली चांदी मांग निकलने से 55,700 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी सोने और चांदी के भाव में अलग अलग रुख देखा जा रहा था। एक और अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना कमजोरी के साथ $1,759 10 सेंट प्रति औंस पर चल रहा था, लेकिन चांदी मजबूत होकर $19 20 सेंट प्रति औंस पर चल रही थी। पुरी जी, सोने और चांदी का रुख आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में कैसा दिख रहा? आज के कारोबार को देखें तो चांदी थोड़ी सी मजबूत हो रही है सोने की तुलना में। हाँ मनोज जी, पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मूव नहीं आ सकता सोने और चांदी में। वो रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही रहने वाली है। यदि हम निवेश की दृष्टि से समझना चाहें तो जो एक भौतिक सोना होता है उसकी तुलना में जी अभी लेटेस्ट अब देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आ रहे हैं जिसमें कुछ ब्याज भी मिलता है, 2.5% 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। वो अच्छे ऑप्शन है यदि आप निवेश करना चाहें। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks log marginal gains amid positive global cues. Sensex closes above 58,800 points. Nifty settles above 17,550 points. And Brent crude oil prices hover above $100 per barrel level. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.